Welcome back to our lecture series of matrix spaces. In this lecture, we are going to discuss bounded sets and compactness. To understand this concept, we must be familiar with the open cover, or you can say open covering of a subset in matrix space, and then we will talk about the finite subcover. Okay, so let us start this lecture by writing some definitions. So, definitions. And in this scenario, we are going to have the first definition is open, open cover. Okay, we can call open cover or sometime we call it as open covering. Okay, so let x comma d be a metric space, metric space, and suppose we have a subset y in x. ठीक है. Now we are having some collection, so let capital H be a collection of open sets in x with the property that this y contained in the union of the set z, where this z is an element from H. That is, this z is an open set, so open subset of this X. Okay, or equivalently, what we can say, that for each y in y, there is a z in H, such that this y is an element of z. Okay, then this collection, then this H is said to be an open cover, or we can say open covering of y. Okay, so basically what we have, suppose somewhere in this space we have, this is x, okay, and say this is our y. Okay, now what we are collecting, हम एक H ऐसा कलेक्शन बना रहे हैं जिसके अंदर ये सारे ओपन सेट है. फर्स्ट वी आर हैविंग this open set, then we are having this open set, then we are having this open set, and like this. Okay, so ऐसा ड्रॉ करने का मेरा सेंस है कि आपको मैं ये बता रहा हूँ कि यहाँ तक का जो एरिया है दैट इज कवर्ड बाय दीज 4 ओपन सेट, एंड लाइकवाइज वी कैन ड्रॉ various this kind of open sets, right? So these are the open sets. Okay, ये जितने भी हमारे पास इस तरीके की स्ट्रक्चर्स हमें दिख रही हैं, these are the open sets, or let me write open subsets of x. ठीक है, तो हमने इस x के ऐसे ओपन सेट कलेक्ट किए हैं कि वो सभी इस y को कवर कर रहे हैं कंप्लीटली. ओके, y का ऐसा कोई भी मेंबर नहीं है जो इसमें किसी ना किसी ओपन सेट के अंदर नहीं जा रहा हो. ठीक है, तो ये जो कलेक्शन है जिसका हर एक एलिमेंट ये ओपन सेट है, तो उस कलेक्शन को, जैसे यहाँ पर H था, तो उस कलेक्शन H को हम इस Y के लिए ओपन कवरिंग बोलेंगे. ठीक है, कवरिंग इसलिए क्योंकि ये सारे ओपन सेट मिलकर इस Y को कंप्लीटली कवर्ड कर रहे हैं, और ओपन इसलिए क्योंकि इस कवरिंग में हम ओपन सेट्स का यूज़ कर रहे हैं. ओके,
So this is about the open covering of Y, which is a subset in the metric space X. Okay. Now suppose हमने यहाँ पर कहा वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द नंबर ऑफ ओपन सेट्स, कि हमें कितनी रिक्वायरमेंट है या फिर कितने ओपन सेट्स की रिक्वायरमेंट है जिससे कि हम वाई को कवर कर पाए. ओके. अगर किसी सिनेरियो में हमारे पास ऐसा कुछ सिचुएशन है जहाँ पर दिस वाई कैन बी कवर्ड यूजिंग सम फाइनाइट नंबर ऑफ ओपन सेट्स. ओके. तो हम क्या कहेंगे दैट कवर इज फाइनाइट, और जब कोई भी किसी भी y के लिए उसके किसी भी ओपन सेट के पास कोई फाइनाइट सब कवर अवेलेबल है तो उस केस में दिस y becomes compact. Okay, so let me write first the definition of finite subcovering of y, and then we are going to define when a metric space is compact. Okay, so the second definition is finite subcovering. Second definition is finite subcovering of y. ओके, यहाँ पर हमने y के लिए डिफाइन किया है. सो फाइनाइट सब कलेक्शन, जैसे यहाँ पर हमने h कलेक्शन लिया था उसी में से ही कोई कलेक्शन ले रहे हैं. सब कलेक्शन ऑफ दिस h which is itself a cover is called a finite subcover or finite subcovering ऑफ y. ओके. तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमेशा किसी y के लिए ऐसे फाइनाइट सब कवर अवेलेबल ही हो, बट जिन y या फिर ऐसे मैट्रिक स्पेस के लिए इस तरीके के फाइनाइट सब कवर अवेलेबल होते हैं तो ऐसे मैट्रिक स्पेस को हम कॉम्पैक्ट मैट्रिक स्पेस बोलते हैं. सो द नेक्स्ट डेफिनेशन इज अबाउट कॉम्पैक्ट मैट्रिक स्पेस. कॉम्पैक्ट metric space. So a metric space x comma d is said to be compact if every open covering h of x has a finite subcovering. ओके. नाउ देखिए, हमने जो ओपन सेट कलेक्ट किए हैं वो x के ही सबसेट्स हैं, और जब हम इनका यूनियन लेंगे तब वो भी एक x का सबसेट ही बनेगा. इसका मतलब जो भी कवर्स होंगे वो हमेशा x के तो सबसेट होंगे ही होंगे. ठीक है. द अदर साइड इज कमिंग फ्रॉम दिस पर्टिकुलर सिनेरियो कि ये फाइनाइट सब कवरिंग है या फिर ये कवरिंग है. इसका मतलब ये जो x है दैट विल कंटेन इन द यूनियन ऑफ ओपन सेट, और जो यूनियन था वो तो ऑलरेडी x में था. इसका मतलब वो यूनियन और x दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे. ठीक है. दैट इज there is a finite subcollection that is z1, z2 and so on, zn, that contained in the set contained in H such that this x is equals to union of these zi's where I is running from 1 to
एन, ओके, क्योंकि ये सारे जी आई एक्स के ही सबसेट थे, तो इनका यूनियन लेंगे तो वो एक्स का सबसेट होगा ही। और कवरिंग हम तब बोलते हैं जब दिस एक्स कंटेन्ड इन दिस यूनियन, अब दोनों तरफ से अगर इंक्लूजन है देन वी हैव दिस इक्वलिटी साइन, ओके। तो इस तरीके से वी कैन हैव अ कॉम्पैक्ट मैट्रिक स्पेस, ठीक है। तो ये एक्चुअल में सिनेरियो कैसा है, लेट मी शो यू टू विजुलाइज दिस, लेट मी राइट, look at this. So if we talk about this image, let me zoom out. Okay, look at this image. Suppose we are having some subset, this is our subset, okay. अब इस सबसेट के लिए यू कैन सी कि जब भी हम बात करेंगे कि इसके ओपन सेट्स है ना, इस हमारे पास ओपन सेट ये y के अंदर की सिनेरियो की बात है, जैसे कि somewhere this is our x space, ओके, दिस इज आर एक्स स्पेस। अब इस एक्स स्पेस में किसी वाई के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम ओपन सबसेट कलेक्ट करके इसे कवर कर रहे हैं, ठीक है। नाउ इन नंबर इट कुड बी इनफाइनाइट और फाइनाइट, वी आर नॉट श्योर अबाउट दैट। बट अगर हमारे पास कुछ ऐसा सिनेरियो है कि हम इस वाई को कुछ फाइनाइट ओपन सेट से कवर कर पा रहे हैं, तो इस केस में इन सारे ओपन सेट को जब हम कलेक्ट करेंगे तो उसे हम बोलेंगे फाइनाइट सब कवर। और जब कभी भी ऐसा कोई फाइनाइट सब कवर अवेलेबल हो फॉर सम ओपन कवर, तो उस केस में वी विल कॉल दिस सब स्पेस वाई एज अ कॉम्पैक्ट मैट्रिक स्पेस, ठीक है। सो आई थिंक now you are clear with the concept of open covering and then a finite subcover, ठीक है।